Assalamu alaikum warahmatullah. This is class 10th, subject general science. Chapter, name of chapter is light. In previous video, we have discussed it in previous video the sign conventions. They are called sign conventions for spherical mirrors. Sign conventions, rectangular, Cartesian coordinate, Cartesian. These are called actually new Cartesian sign conventions. Yes, new Cartesian sign. What are these sign conventions? We have discussed these. Let us recapitulate these sign conventions quickly. Number first is first rule is the principal axis. This is the principal axis. The x-axis or principal axis of the mirror is taken along the x-axis of the rectangular coordinate system. This is the rectangular coordinate system. If this is rectangular coordinate system, its x-axis. This x-axis is considered as the principal axis of the mirror, and the origin of the mirror is taken as the pole of the mirror is taken as the origin of the pole of the mirror is taken as the origin. If this is the concave mirror, pole of the mirror is taken as the origin. Number second rule is the object is taken along the left hand side. This is the object is it is always taken along the left hand side of the mirror, yani it is placed in front of the mirror, or we can say that. This is the second rule. Third rule is, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, light is always incident on the mirror from left hand side, like this, left hand side. Number third rule is all distances which are parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. अगर यहाँ से अगर ये distance measure करनी यहाँ से यहाँ तक, हमें pole से जाना है. pole से पहले हमें pole से measure करना है, pole से यहाँ measure करना है. अगर ये measure करना है, pole से start करना है. ठीक, this is the rule third. Fourth is the distance is measured in the direction of the incident light. Suppose incident light की direction यहाँ है, और जो डिस्टेंस हमें मेजर करनी है उसकी डायरेक्शन यहाँ से है, पोल से इस तरह यहाँ. अगर ये डिस्टेंस मेजर करनी है, ये डिस्टेंस, तो पोल से हमें यहाँ जाना है. सो डायरेक्शंस आर सेम. इंसिडेंट रे एंड द डिस्टेंस जो मेजर करनी है उसकी डायरेक्शन सेम है. सच डिस्टेंस आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, एंड द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोज्ड टू इंसिडेंट रे आर टेकन एज negative. These are negative distances. Incident ray is direction like this, and the distance जो हमें यहाँ opposite measure करना है like this, so these are taken as negative. अगर ये 3 है -3, अगर ये 4 है ये बनेगा +4. ठीक, यानी ऐसे बोल सकते हैं, जो इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, such images are negative. So, and images which are formed behind the mirror, on the right hand side of the mirror, they are taken as positive. ऐसे बोल सकते हैं. ठीक, and the distances which are perpendicular to the principal axis pointing upward, they are taken as positive, and the distances which are perpendicular to the principal axis and pointing downward, these are taken as negative. These are some साइन कन्वेंशंस जो हमने पहले ही पढ़े थे. सो आज का जो टॉपिक है, दैट इज़ रूल्स फॉर ट्रेसिंग, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स. यानी जब हम इमेज स्फेरिकल इमेज बनाते हैं, रे डायग्राम्स बनाते हैं, उनके लिए जो रूल्स हैं वो हमें आज पढ़ने हैं. या पहले याद रखना है, ये हमने साइन कन्वेंशंस पढ़ा. जो ऑब्जेक्ट है, suppose this is a mirror, object is always taken along the left hand side of the mirror, yani in front of the mirror. Suppose this is a concave mirror, so image is formed by reflection in the mirror. अगर हम यहाँ object रखेंगे, so object पे जो light आएगी, वो light किस पे, light rays, these light rays are these light rays fall on this mirror, fall on this
mirror and thereby reflection of light takes place. ये याद रखना है जो every point जो है in the object on the object it acts as a point source, यानी इस point पे infinite number of rays originate होते हैं. यानी अगर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, यानी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट होते हैं. इस पॉइंट पे भी, दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट होते हैं, इस पॉइंट पे भी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट होते हैं. मगर फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी अगर हम लिखना है पॉइंट ऑब्जेक्ट पे, हम उसमें लिखते हैं सिर्फ 2 या 3 रेज हम लेते हैं, 2 और 3 रेज, 2 और 3. हालांकि 2 या 3 रेज ही ओरिजिनेट नहीं होते हैं, ये इसमें जो इससे जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट होते हैं. अगर यहाँ फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी ईजी बनाने के लिए हम 2 रेज लेते हैं या 2 या 3 रेज लेते हैं. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पहले याद रखना है. सो अब दी सपोज यहाँ से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, हमें पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, फिर ये मिरर पे पड़ते हैं. मगर हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 1 और 2 रेज. इफ़ दे आर रिफ्लेक्टेड, if they fall on this mirror, they are reflected. If these reflected rays meet at any point, this point B, suppose this point B is the mirror image of the point A. If point A is the where these rays originate, where these rays start, and these rays after originating this fall on the mirror. After reflection, if these rays meet this point, this meeting point is the mirror image of this point where these two rays originate. ये याद रखना है. ठीक. सो सपोज ये हेड है, यहाँ भी यही हेड बनेगा, हेड ये इस जैसा हेड, यानी इसका रिप्लिका यहाँ बनेगा. ठीक. दिस इज द मिरर इमेज, हमने पहले ही पढ़ा था. ठीक. सो रूल क्या है? रूल्स, देयर आर 4 रूल्स हैं, ये आपको याद रखना है. नंबर फर्स्ट रूल इज़, अगर हम कनकेव मिरर लेंगे, दिस इज़ द कनकेव मिरर, अगर दिस इज़ द प्रिंसिपल, इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज़ द पोल ऑफ द मिरर. इफ द रे ऑफ लाइट, if the ray of light is parallel to the principal axis like this, if the ray of light incident on the mirror parallel to the principal axis, after reflection from the mirror, it passes through the focus of the mirror. In case of concave mirror, it passes actually through the focus of the mirror. But in case of convex mirror, like this is the convex mirror, it appears as if it is coming from the F, like this. This is the pole. It gets like this, diverged. It is diverged. It gets diverged. So it appears as if it is coming from this F. So F in case of concave mirror is real image. F in case of convex mirror is virtual point. Here it is real point, here virtual point. So incident ray, if there is a ray of light incident on the mirror parallel to the principal axis, after reflection from the mirror passes through the focus of the mirror. This is the first rule. Second rule, what is second rule? Second rule है, suppose this is the concave mirror, the concave mirror, principal axis है, this is the pole, principal axis है, dash. अगर इंसिडेंट, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास होगी लाइट, इंसिडेंट रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, if it passes through the center of curvature, if the ray of light passes through the center of curvature, in case of center of curvature, it retraces its path on reflection. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास होगी इंसिडेंट रे, ऑन रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ. क्यों? क्योंकि जो मैंने बोला है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रे होती हैं, जब ये फॉल होती हैं मिरर पे, दिस इज एक्चुअली नॉर्मल, वो है, उसको बोलते हैं नॉर्मल. सो यहाँ नॉर्मल इंसिडेंस होगा, नॉर्मल इंसिडेंस यानी जो लाइट हैं वो इसी पाथ से वापस जाएगी, यानी सच रे रिट्रेस इट्स पाथ ऑन रिफ्लेक्शन. कौन सी रे? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं. सो इनका सब कन्वेक्स मिरर ये कैसे बनेगी? कन्वेक्स मिरर में सपोज दिस इज द कन्वेक्स मिरर, ये दिस इज द पोल, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से जाएगी सपोज लाइक दिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से बाइजाइल लाइक दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऐसे नहीं,
center of curvature यहाँ से like this, like this is the point A, this is the point A से यहाँ से रोज नोट हैं, फिर यहाँ से वापस जाएगी, मगर हम बैकवर्ड जब प्रोड्यूस करते हैं it appears as it is coming at it is passed through the F, it passes through the C, यानी अगर ये C यहाँ मिरर नहीं होगा, ये यहाँ से जाएगी, C से जाएगी, इसका मिरर, इसका जो इमेज है ये ऐसे बनेगी, ठीक। सो इफ द रे ऑफ लाइट इज पास, इफ द रे ऑफ लाइट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्शन इट retraces its path. This is the rules. Third is opposite of first. So this is the concave mirror, this is the pole, x axis dash the principal axis. अगर फोकस से जाएगी, सपोज फोकस से जाएगी, यहाँ फोकस है, अगर इंसिडेंट रे यहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, सो जब फोकस से जाएगी रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है, रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ this is the rule third, यानी ray of light passes through the principal axis, on reflection it becomes parallel to the principal axis. अगर कन्वेक्स मिरर में कैसे बनेगी, यही हम दिखाएंगे यहाँ। सो यहाँ पोल, दिस इज द पोल, दिस इज एक्स डैश, यहाँ से ये जाएगी, यहाँ से ये होगा रिफ्लेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट हमें यहाँ ऐसा ज़ाहिर होगा क्योंकि हमें ऐसा जो हमें यहाँ दिखेगा ये F से यहाँ जाती है, F से आती है, F से लाइक दिस, F से पास होती है, ठीक। अगर यानी मिरर हो नहीं होगा सो यहाँ होगा, ऐसे जाएगी, ठीक। इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द फोर्थ रूल। दिस इज फोर्थ रूल इज व्हाट इज फोर्थ रूल, कन के मिरर लेंगे हम, यहाँ फोर्थ रूल में क्या होता है, दिस द पॉइंट P, अगर इंसिडेंट रे फॉल्स टुवर्ड्स मिरर, falls towards pole of the mirror, falls towards pole obliquely, it is reflected obliquely as per the laws of reflection. कन्वेक्स मिरर में ऐसे ही बनेगा, लाइक दिस, obliquely fall होगी towards the pole of the mirror, reflected भी obliquely, reflected obliquely होगा, reflected भी obliquely होगा, like this. These are the four rules which are used for obtaining images in case of spherical mirrors. Thanks.